Hello students, welcome back to my channel Incredible Scholars। और अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सेक्शन 3 का बचा हुआ पार्ट। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपका जो फर्स्ट पार्ट था उसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था Greek War of Independence. Then we had discussed about the Romanticism. अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसी सेक्शन के बचे हुए पार्ट को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली द कंडीशन ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, अर्ली पीरियड ऑफ द 19th सेंचुरी। दैट मीन्स यू कैन से द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। हम डिस्कस करेंगे 1848 revolution in France. Then we'll be discussing about a weavers revolt in Silesia, and finally हम डिस्कस करने वाले हैं liberal revolution in the German speaking regions, that is what we call the Frankfurt Parliament. तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन ऑफ the European society, the European society during the first half of the 19th century. अगर हम इस पीरियड को देखते हैं पूरा, दैट मीन्स फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, अगर हम इस पीरियड को देखते हैं तो व्हाट डू वी फाइंड कि यूरोप के अंदर ऑलमोस्ट इन ऑल द पार्ट्स द पॉपुलेशन हैड इंक्रीज्ड, राइट? सो व्हाट डू वी फाइंड? द पॉपुलेशन in all parts of Europe increased rapidly, right? And this created a shortage of food grains. During this period, what do we find? Migration of people from rural areas to cities to find jobs in newly set up industries, right? But all were not so fortunate. सभी लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे that they could find jobs in these factories. So, इसकी वजह से क्या था? Unemployment was high. Unemployment was high, and people were living in overcrowded slums. वो स्लम एरियाज में रहने के लिए मजबूर थे। लोगों के पास काम नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, राइट? सो हियर व्हाट डू वी फाइंड? व्हाट अबाउट द आर्टिशंस, द स्मॉल बिजनेसमैन? ये जो सिटीज के अंदर
आर्टिशियंस या स्मॉल बिजनेसमैन थे, दे हैड टू फेस अ स्टिफ कंपटीशन। किसके साथ? विद द मशीन मेड इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई और उसके बाद वहां पर जो प्रोडक्शन था गुड्स का वो हमारा काफी तेजी से इंक्रीज हुआ एंड अल्टीमेटली सिंस द प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड इट वाज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। द goods were produced by using the machines so they were almost cheaper। ठीक है, तो जो हमारे बिजनेसमैन थे सिटीज के अंदर, टाउन्स के अंदर, दे हैड टू फेस stiff competition। that means they could not be able to expand their business, they could not find the buyers for the goods they were producing। so small businessmen small businessmen or producers were facing stiff competition with machine made goods imported from England, right? The people they were preferred to have, लोग जो है वो इन मशीन मेड गुड्स जिसको इंग्लैंड से इंपोर्ट किया जाता था उसको वो ज्यादा प्रेफर करते थे। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? द बेसिक रीजन वाज दैट दे वर चीपर। ये गुड्स जो थी वो हमारी क्या थी? चीप थी। सो यू कैन से द पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? दे वर कॉमन, right? So you can say that hunger, poverty and unemployment were common। ठीक है, ये सारी चीजें यूरोपियन सोसाइटी के अंदर क्या थी? बहुत कॉमन थी, राइट? सो व्हाट वी हैव नोटिस के यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में हंगर, पॉवर्टी और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट इट वाज वाइड स्प्रेड। 1848 this was one such year when there was a shortage of food grains as well as a widespread unemployment in France। So basic cause that was hunger due to shortage of food grains and widespread unemployment। What was the ultimate result of this? The population, if we talk about the event, people in Paris came out onto the roads and erected barriers। फ्रांस के अंदर
स्पेशली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पेरिस। पेरिस के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं सड़कों पर आ गए अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। उन्होंने क्या किया, रोड्स पर उन्होंने बैरियर्स जो हैं वो खड़े कर दिए। दे फोर्स्ड लुई फिलिप टू फ्ली। इन्होंने जो लुई फिलिप था उसको भागने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। आफ्टर दैट व्हाट आउटकम वी कैन फाइंड, व्हाट वाज द रिजल्ट? द नेशनल assembly proclaimed France a republic, राइट? फ्रांस को उन्होंने रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। राइट टू वर्क वॉज गारंटीड, This was another major outcome. Then universal male suffrage was granted. ठीक है, that means all men above 21 years they were given the right to vote, or you can say all men above 21 years were given the right to vote, स्टेट वर्कशॉप्स यानी कि गवर्नमेंट वर्कशॉप्स जो हैं वो सेटअप किया गया। स्टेट वर्कशॉप्स was set up to provide एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करने के लिए स्टेट वर्कशॉप्स जो हैं वो सेटअप की गई, राइट? सो दिस वाज व्हाट वी नो अबाउट द February 1848 रेवोल्यूशन इन फ्रांस। इसके मेन कॉज क्या थे? वाइड स्प्रेड हंगर एज वेल एज यू कैन से द वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका इवेंट अगर हम बात करें तो लोग जो थे पेरिस के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे केम आउट ऑन द रोड्स, ठीक है, और उन्होंने जो है रोड्स पर बैरियर्स इरेक्ट कर दिए। दे फोर्स्ड लुई फिलिप, जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क था, उसको भागने के लिए मजबूर कर दिया, सिटी ऑफ पेरिस को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आउटकम क्या था? इसका रिजल्ट क्या था? नेशनल असेंबली ने फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। राइट टू वर्क उन्होंने प्रोवाइड किया, यानी कि गारंटी कर दिया कि भाई अब हम सभी को काम देंगे। यूनिवर्सल मेल सफरेज वॉज ग्रांटेड, या हम कह सकते हैं ऑल मेन जिनकी एज 21 ईयर से अबव थी उनको राइट दिया गया वोट देने का अधिकार दिया गया। और साथ ही साथ स्टेट वर्कशॉप्स को वहां सेटअप किया गया, ठीक है, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके। नाउ बिफोर दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन in 1848 there was a revolution in Silesia. This was a Polish region, और यहां पर वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ एक रिवोल्ट किया, एंड दिस रिवोल्ट was took place in 1845, right? Weavers revolted against contractors
कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट किया। हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल and placing their orders. Now what happened? अब इस रीजन में जो हमारे वीवर्स थे, since the weavers they could not get the work regularly, so what happened कि इसका फायदा कॉन्ट्रैक्टर्स ने उठाना शुरू कर दिया। They begin reducing their wages, right? So this is what the contractors took advantage of unemployment among weavers and reduced their wages. And against this basically you can say ये revolution जो है वो weavers ने किया. That means the weavers had basically did the revolution against the reduction in their wages. They were demanding higher wages. ज्यादा पैसा चाहते थे, लेकिन चूंकि उनके वेजेस को रिड्यूस कर दिया गया तो अल्टीमेटली दे हैड रिवोल्टेड. वन ऑफ द जर्नलिस्ट विलियम वॉल्फ described the revolt. How? वो क्या कहता है कि on 4 जून, ठीक है, at 2 p.m. around 18,000 weavers came out of their homes and reached to the contractor's house. राइट? करीब 18,000 वीवर्स जो हैं वो अपने घरों से निकले और कॉन्ट्रैक्टर के घर पर पहुंच गए. वहां पर initially there were some hot talks, you can say. उनको सबसे पहले जो है वो गालियां दी गई, abusive language यूज किया गया, and then they were threatened. उनको धमकी दी गई, डराया धमकाया गया. After that, weavers they broke into the house. उस कॉन्ट्रैक्टर के घर में वो जबरदस्ती घुस गए. एक ग्रुप जो था वीवर्स का, उसने घर के अंदर, उस बंगले के अंदर जितना भी एक्सपेंसिव जो भी सजावट का सामान था उस सबको उन्होंने तोड़फोड़ दिया. एक ग्रुप जो है वो अंडरग्राउंड जो गोडाउन था वहां पर पहुंच गया और वहां पर जितना भी कपड़ा रखा हुआ था उसको उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट दिया. वीवर along with the in this case you can find कि किस तरह से वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया. नाउ व्हाट अबाउट द कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपनी फैमिली के साथ जान बचाकर भागा. आस पड़ोस के जो भी गांव थे वहां पर उसने शेल्टर के लिए रिक्वेस्ट किया, बट
the villagers in other villages, they had refused to give them shelter, any refuge. उनको उसको किसी भी तरह से शरण देने से उन्होंने मना कर दिया. बाय द इवनिंग व्हाट हैपेंड कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पुलिस के साथ वापस आता है एंड इन अ क्लैश बिटवीन द वीवर्स एंड द पुलिसमैन, करीब करीब आपका अबाउट 20 वीवर्स जो है वो उसमें मारे जाते हैं इन द फायरिंग, राइट. सो दिस वाज व्हाट हैपेंड इन दिस revolt which was led by the weavers in Silesia in 1845. So this was what happened here. They were welcomed with abuses and then threatened. A group of weavers entered in the house and broke the elegant decoration another group entered into the godown and cut the cloth in shreds. ठीक है. The contractor ran away with his family and asked refuge but he was not granted any shelter. Right. Finally, in the evening, what happened? That he returned with the policemen, and in the firing, a number of weavers, they were killed. Now, till now, we had discussed about the revolutions. वो revolutions जिसमें हमारा बेसिकली कौन लोग थे? पुअर. जिसमें हमारे कौन लोग थे? स्टार्विंग पेजेंट्स एंड आर्टिशंस, अनएम्प्लॉयड. इस रेवोल्यूशन के साथ साथ, इन सारी रेवोल्यूशंस के साथ साथ, देयर वाज अ रेवोल्यूशन व्हिच वाज टू बी लेड बाय द लिबरल्स. एक और रेवोल्यूशन जो है वो यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में शेप ले रही थी, और इस रेवोल्यूशन को लीड करने वाले कौन थे? लिबरल मिडिल क्लासेस, एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास पीपल. फ्रांस के अंदर ऑलरेडी वी नो कि 1848 में रेवोल्यूशन हो चुका था, दैट लेड टू द एब्डिकेशन ऑफ मोनार्की एंड फ्रांस हैड आल्सो बिकम अ रिपब्लिक. उन सारे रीजन्स में जहां पर नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, जैसे आपका जर्मनी हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर हो गया,
उन सभी रीजन्स में ये जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे, इन्होंने अपनी जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, दैट मीन्स दे वर वांटेड दैट देयर मस्ट बी अ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट वुड रन। तो अपनी इस डिमांड को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिमांड को, उन्होंने नेशनल यूनिटी के साथ कंबाइन कर दिया था। दे हैड टेकन एडवांटेज अगेंस्ट द ग्रोइंग अनरेस्ट। जो ग्रोइंग अनरेस्ट था, दे हैड टेकन द एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग अनरेस्ट अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, और अपनी डिमांड को उन्होंने आगे बढ़ाया। स्पेशली दे वर वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर वांटेड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दे वर वांटेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। इस डिमांड को उन्होंने आगे बढ़ाया टुगेदर विद द डिमांड फॉर नेशनल यूनिटी। इन द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स, what happened? A number of political organizations in German regions, a number of political associations came together in the city of Frankfurt to vote for the all German National Assembly. All German National Assembly. राइट? तो 1848 में जर्मन स्टेट्स के अंदर, जर्मन रीजन्स में क्या हुआ, बहुत सारे जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे जिनके मेंबर्स बेसिकली प्रोफेशनल्स थे, जिनके मेंबर्स में बेसिकली हमारे ट्रेडर्स थे, स्मॉल बिजनेसमैन थे और प्रॉस्पेरस आर्टिशंस थे। बेसिकली यू कैन से द मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल। तो ये सारे लोग जो हैं वो सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में एक साथ आ गए and they decided to vote for the all German National Assembly on 18th of May, on 18 May 1848, 831 elected members or elected representatives marched in a procession to reach St. Paul Church, where a parliament was convened. ठीक है? तो 18 मई 1848 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे इस ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के, वो एक प्रोसेशन के साथ वो कहां पहुंचे? सेंट पॉल चर्च पहुंचे, जहां पर एक पार्लियामेंट को उन्होंने कन्वीन किया था, पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया था। व्हाट हैपेंड हियर? दीज रिप्रेजेंटेटिव्स दे फ्रेम्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। These representatives
framed a constitution, framed a constitution for unified Germany to be headed by a monarch. उन्होंने जो है वो यूनिफाइड जर्मनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार किया। उस यूनिफाइड जर्मनी के लिए किसको रूल करना था? एक मोनार्क को, यानी कि दे वर वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और जब उन्होंने, ठीक है, क्या किया? दे offered the crown to Frederick William for the King of Prussia. भाई उन्होंने किंग ऑफ प्रशा को ये ऑफर दिया कि भाई आप जो है वो यूनिफाइड जर्मनी के राजा बन जाओ, किंग बन जाओ। तो किंग ऑफ प्रशा ने क्या किया? ही हैड रिफ्यूज्ड। जो फ्रेडरिक विलियम जो वहां के राजा थे प्रशा के, उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। ही हैड रिजेक्टेड द प्रपोजल, राइट? सो he offered the crown to Frederick William IV, the king of Prussia, but he had refused. उसने क्या किया? उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। He had rejected the proposal. Right? And he had joined the other monarchs against this liberal attempt. Meanwhile, ये जो मेंबर्स थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के, दे लॉस्ट देयर बेस, दे लॉस्ट देयर सपोर्ट। उसका रीजन क्या था? बेसिकली दे वर इलेक्टेड बाय द वर्कर्स, आर्टिजन्स एंड पेजेंट्स। लेकिन उन्होंने उनकी डिमांड्स को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। दो दे वर इलेक्टेड बाय द वर्कर्स, द पेजेंट्स, द आर्टिजन्स, बट these representatives, they had ignored the demands of these sections of the society. That's why they lost their support. तो एक तरफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, they lost their base, their support among the masses. On the other side, जो मोनार्की थी और जो मिलिट्री थी, they have consolidated their powers. Finally, what happened in the end? Finally, the troops were called, and the parliament was disbanded. राइट? तो पार्लियामेंट को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा बेसिकली क्या किया कि फाइनली ट्रूप्स को जो है बुलाया गया और जो भी मेंबर्स थे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको वहां से सेंट पॉल चर्च से निकाल दिया गया और इस पार्लियामेंट को बैन कर दिया गया। इज इट फाइन? नाउ this was what happened here. What about the women? Women, they had actively participated in the liberal activities. लेकिन जब ये पार्लियामेंट कन्वीन किया गया और उससे पहले भी जब ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग हुआ, women, they were not given the right to vote. And at the same time, the women, they were also not allowed to participate in the parliament.
विमेन को पार्लियामेंट में भी पार्टिसिपेशन का परमिशन नहीं था, राइट. इट वॉज ओनली दैट विमेन वर अलाउड टू जस्ट रिमेन प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट एज ए स्पेक्टेटर फ्रॉम द गैलरी. उनको केवल गैलरी से इस पार्लियामेंट की पूरा प्रोसीडिंग्स देखने का परमिशन दिया गया था. इसके अलावा उनको कोई भी वहां पर राइट्स नहीं दिया गया था. दो दिस पार्लियामेंट वॉज डिस्बैंड, दो द लिबरल अटेम्प्ट, दिस लिबरल रिवोल्यूशन वॉज suppressed by the combined forces of the army and the monarchy. लेकिन एक चीज जो है वो वहां के कंजर्वेटिव मोनार्क्स ने, यूरोप के कंजर्वेटिव मोनार्क्स ने रियलाइज कर लिया था कि ये जो पूरा साइकिल है रिवोल्यूशन का और रिप्रेशन का, इसको रोका जा सकता है केवल एक ही तरीके से कि लिबरल्स को कुछ कंसेशंस, कुछ उनके डिमांड्स को पूरा कर दिया जाए. एंड देयरफॉर व्हाट हैपेंड, सो मेनी रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड. फ्यूडलिज्म को एबोलिश किया गया और साथ ही साथ जो हमारे पेजेंट्स थे दे वर फ्रीड फ्रॉम द सर्वडम एज वेल एज फ्रॉम द minorities. So this was what happened after the parliament. So here we are finishing our topic. The whole of the section gets completed. So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. अगर if you like the video, please कमेंट करिए. अपने फ्रेंड्स को, आपके जो साथी हैं उनको मेरे चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स को रिकमेंड करिए. एंड सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें सो दैट यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द न्यू वीडियोस विच वर गेटिंग अपलोडेड इन फ्यूचर. थैंक यू एंड हैव अ लर्निंग डे अहेड.